Hello, Saurabh sir, are you there? Hello. Yeah, very good morning. Good morning, sir. I'm making you the co-host so that you will be able to share the PPT. All right, all right. Sir, we are waiting for the participants to join. Actually, the time given to them is 11. So I think we should wait for other participants to join as well. Yeah, that is totally okay for me. Yes, we can wait for like this 5 to 10 minutes. That's fine. Yes. Okay, sir.
Hello, Saurabh sir. I think. Yes, please. Okay, okay. Principal ma'am. Okay. So I think we should start, and by the meantime, other will join us. So yeah. A very good morning and a hearty welcome to everyone in today's workshop on Vedic Maths, organized by the Department of Mathematics of M.D.S.D College, Ambala City. I extend my warm welcome to our resource person, Mr. Saurabh Sharma. I, on behalf of all M.D.S.D College, would like to express my thanks to Saurabh sir for sparing his time to share his knowledge with all of us. I welcome our worthy principal, ma'am, Dr. Kiran Angra, who has always been a source of inspiration and motivation for all of us. A dream doesn't become reality through magic. It takes sweat, determination, and hard work. Yes, it's a belief endorsed by our principal, ma'am. I welcome you, ma'am, and I acknowledge your presence. Today, we all have gathered online to celebrate National Science Day by learning the techniques of Vedic maths from Saurabh sir. Dear all, Mr. Saurabh has 10 years of experience in teaching Rubik's Cube. He is a record holder in that. Moreover, sir is a chess trainer and a card magician as well. He is a qualified Vedic maths trainer, imparting his knowledge through various workshops across the country. I welcome you, sir, and now I invite you for your session. Over to you, sir. Yeah, thank you so much, ma'am. Let me just share the video first of all. I hope you all can see me now, right? Okay. Good morning to one and all present here. I would like to thank Principal Ma'am, Dr. Kiran Angaraji, and Ms. Anchal Sharma, like for giving me this opportunity to interact and to conduct this workshop on Vedic maths. So I guess we can start, right? Sir. All right. So first of all, I would like to give some few instructions regarding the workshop. Uh, One more thing, I hope like so many teachers and professors and my dear learners are here in this meeting. So first of all, I would like to thank and welcome everyone here. So first of all, you should keep a notebook and a pen by your side and a calculator if you can to just verify the results, right? So let's just start from the very root. Uh, First of all, let me just share the PPT so that we all can relate. Yeah, is it visible? Yes, sir. It's very much visible. All right, all right. So I'll be using Hindi and English together so that it will be comfortable for each and everyone. इसको इस तरह से देखते हैं कि how does this universe actually constructed? Like we all know about Big Bang theory, right? कि एक बहुत बड़ा explosion हुआ जिससे कि बहुत सारी galaxies बनी. We have black holes, we have asteroids, we have meteoroids, we have a lot of planets, we have stars, and much more than that. Like space objects we can say, right? तो उसमें हमारी एक छोटी सी गैलेक्सी है जिसका नाम है मिल्की वे और उसमें एक छोटी सी जगह पर हम रहते हैं लाइक जिसको हम सोलर सिस्टम कहते हैं उसमें भी हमारा एक छोटा सा प्लेनेट है जिसका नाम अर्थ है और उसमें भी बहुत सारे कॉन्टिनेंट्स हैं जिसमें कि हमारा जो कॉन्टिनेंट है दैट इज एशिया उसमें भी हम एक छोटी सी कंट्री में रहते हैं इंडिया में
और उसमें भी हम लाइक एक बहुत छोटी सी जगह पे बहुत छोटी सी जगह पर बैठ के ये सब चीजें कर रहे हैं, और ये सब कुछ हमने एक्सप्लोर किया एक्चुअल में, राइट। और इसके अलावा और सब क्या क्वेश्चन आते हैं हमारे दिमाग में कि लेट्स से कि पहला इंसान कैसे आया होगा एक्चुअल में। तो इसके लिए हमारे पास क्या एविडेंसेस है कि द लाइफ स्टार्टेड विद जस्ट द वाटर, राइट, कि पानी से स्टार्ट हुआ है सब कुछ। लाइक सबसे पहले एक्वाटिक एनिमल्स बने, उनमें रिप्रोडक्शन वगैरह हुई तो डिफरेंट तरह के एनिमल्स बने, एंड उसके बाद तरह तरह की स्पीशीज वहां से ओरिजिनेट हुई है। लाइक वी हैव होमो इरेक्टस, होमो बैकुलस एंड वी होमो सेपियंस, इनके पास पावर ऑफ रीजनिंग है। और ओवर द इयर्स, ओवर मिलियन ऑफ इयर्स हमने इतना सब कुछ एक्सप्लोर किया है, अपने दिमाग की क्षमता को इतना बढ़ा लिया है कि धीरे धीरे हम अपनी लाइफ को इतना आसान करते जा रहे हैं। लाइक एनर्जी कम लगे, टाइम कम लगे। तो ये सारी सारी की सारी इन्वेंशन इन्हीं सब चीजों पे बेस्ड है टोटली। अब अगर हम मैथ्स की बात करें तो मैथ्स ये नहीं है कि लाइक अभी हम 100 200 300 400 साल पहले से स्टार्ट कर रहे हैं, ये बहुत पुराना है। लाइक वी डू हैव सो मेनी एविडेंसेस। लाइक अगर हम वो इजिप्ट के पिरामिड्स की बात करें, आई आई होप यू ऑल कैन रिलेट विद, लाइक सभी ने वो पिरामिड्स देखे हुए हैं, मे बी इन द पिक्चर्स, मे बी इन द वीडियोस। वो सभी पिरामिड्स बिना मैथ्स और फिजिक्स के अंडरस्टैंडिंग के बिना बन ही नहीं सकते हैं। हो सकता है कि उस समय के लोग उसको बहुत ही अलग तरह से देखते हो, बट उनके पास वो अंडरस्टैंडिंग थी। अगर हम सबसे बड़े पिरामिड की बात करें, उसका नाम है पिरामिड ऑफ गीजा। वो कम से कम 500 फुट ऊंचा है, और उसमें कोई लेंटिल नहीं है, उसमें सिर्फ भारी भारी पत्थर लगाए हुए हैं, जो कि एक एक पत्थर अराउंड 1 1 टन या उससे ज्यादा का है। तो उस समय जस्ट इमेजिन कि इतनी हाइट पर इतनी भारी भारी पत्थर कैसे गए हैं, वो बिना मैथ्स और फिजिक्स के पॉसिबल ही नहीं है। और वो परफेक्टली शेप्ड है। इवन कि अभी भी अगर हमें उसे कॉपी करना है तो इट वुड बी इम्पॉसिबल फॉर अस टू कॉपी दैट पर्टिकुलर काइंड ऑफ थिंग, लाइक द पिरामिड्स ऑफ इजिप्ट। और इसके अलावा भी बहुत सारे एविडेंसेस है हमारे पास जिससे हमें पता लगता है। अच्छा, अगर मैथ्स की शुरुआत देखें तो मैथ्स की शुरुआत कैसे हुई कि सबसे पहले हमने काउंट करने के लिए टेली मार्क्स यूज किया है। लाइक हम काउंट करने के लिए हम Sorry, ऐसे कुछ लाइंस लगाते थे, राइट। एंड for a आफ्टर second. दैट, या Sir, your slides are not moving. मैम, आई एम नॉट एक्चुअली मूविंग द स्लाइड्स, आई एम जस्ट Okay. इंटरैक्टिंग एट द मोमेंट, या I'll be using the slides as well for the Vedic maths only. All right. Let me just share this with you. Am I audible again? Sir, you are very much audible. All right. तो रोमन्स जो थे उन्होंने रोमन न्यूमेरल्स बना लिए थे, बट इंडियंस ने ही बहुत अच्छा सिस्टम दिया जिसको हम की बेस 10 सिस्टम बोलते हैं, जिसमें कि हमारे पास नंबर्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 0, जिससे कि हम कोई भी कैलकुलेशन, कितनी भी बड़ी कैलकुलेशन कर सकते हैं। चलिए वैदिक मैथ्स के ऊपर आते हैं। दिस इज द पिक्चर ऑफ श्री भारती कृष्णा तीर्था जी महाराज, जिन्होंने की वेदास को स्टडी करके कुछ वैदिक ट्रिक्स बनाई थी, कुछ सूत्रास दिए थे हमें, जिसके बेस पर आज के टाइम में हमारी कैलकुलेशंस बहुत इजी हो गई हैं। इनका बहुत ही अच्छा रिकॉर्ड रहा था। इन्होंने 6 डिफरेंट सब्जेक्ट्स में मास्टर्स किया हुआ है, संस्कृत, इंग्लिश, हिस्ट्री, फिलोसफी, मैथ्स एंड साइंस। ऑलराइट, सो मैं ये कहना चाहूंगा कि वैदिक मैथ्स सिर्फ इतना ही नहीं है कि हम इसमें सिर्फ कुछ ट्रिक्स सीखते हैं। नहीं, ये एक देखने का नजरिया, मैथ्स को देखने का एक तरीका है। अगर आप एक दो चीजें सीख सकते हैं, देयर इज अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी कि दो तीन चीजें आप खुद बना लेंगे उसको देखते हुए। वो मैं आपको अभी इलस्ट्रेट भी करने वाला हूँ कि आप ऐसा कुछ कर भी पाएंगे। अपार्ट फ्रॉम दिस, आई गेस दिस इज अ वेरी वेल नोन लेडी, शकुंतला देवी। इनके ऊपर तो अब मूवी भी बनाई गई हुई है, और काफी सारे रिकॉर्ड होल्डर्स रही हैं ये। लाइक एक बार साउथर्न मेथोडिस्ट यूनिवर्सिटी में इनको एक 201 डिजिट नंबर दिया था, जिसका 23rd रूट बताना था, और उन्होंने 50 सेकेंड में इसका आंसर कर दिया था। इवन के कंप्यूटर wasn't able to calculate this much calculation, और इन्होंने वो कर दिया था। सो इनको
काफी सारे रिकॉर्ड्स हैं इनके, लाइक 13 by 13 मल्टीप्लिकेशन इन्होंने किया था। गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में इनका गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में इनका नाम है। And I guess we all know, like, there are so many advantages of Vedic maths. Like, it saves your time, obviously. It gives you confidence. और वो टेबल्स वगैरह नहीं याद करने पड़ते हैं, मेमोराइजेशन इतना नहीं करना पड़ता है। लाइक हमें अबेकस के बारे में भी पता है, मगर अबेकस इज ओनली लिमिटेड टू द एडिशन ओनली, और उसका दायरा इतना बड़ा नहीं है जितना वैदिक मैथ्स का है। और ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है आपको। So I hope by the end of this workshop, you all the learners will be able to do something like we will have a look at this. We can be able to do something like this. Just give me a second. I just need to prepare something. Just give me a second. Am I audible again? Yes, sir. Yes, sir. You are very much Yeah. audible. All right. So instead of showing you some sort of PPT, I'll be doing all the calculations right in front of you. Okay. Okay. Let's have some idea how all these tricks and sutras actually work. Let's start from the very basic. Let's say we have to multiply any digit number with the digit 5. Let's take a very small example, like 5 times 246. I know it's quite easy. कुछ लोग बहुत तेजी से इसको वैसे भी मल्टीप्लाई कर लेंगे, इट्स नॉट अ वेरी बिग डील, है ना। एक और चीज मैं मेंशन करना चाहूंगा, देयर इज अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी बहुत सारे लोगों को ये सब चीजें आती होंगी, बट हो सकता है कि मे बी उन्हें एक दो चीजें सीखने को नहीं मिल जाए, है ना। दैट विल बी अ ग्रेट सक्सेस टू मी। ओके, सो 5 टाइम्स 246 नो डाउट हम कर सकते हैं, बट if we'll if we'll keep this 5 as, or if we'll say this 5 is actually half of 10, so we can write this number as 10 by 2, and it's quite easy to divide this number by 2, which is far easier to multiply this number by 5. So all we have to do is this, just divide this number by 2, which will give us 1, 2, 3, and we'll put a 0 in the end because this number is further multiplied by the number 10. So it's quite easy. The answer will be 1230. Fine. Let's take one more example. Okay. Let's take one more example. 5 times. Now you have the idea like how we can actually multiply the number by 5. Let's take an odd number.
I know it's quite easy to divide an even number by 2. Like if we'll divide this number by 2, this will be something like 1, 2, 8, 7, and we'll put a 0 in the end, obviously. So all you have to do is like divide the number by 2. So if you can do it mentally, if you can divide the number by 2 mentally, then it will be quite easy for you. Okay. As I said, it's actually a perspective. So you can use this idea like, what if we have to multiply any digit number by 25? Then what we'll do? Suppose this is the number that we want to multiply with 25. So again, we can write 25 as 1/4 of 100, right? So all we have to do is divide this number by 4 and we'll apply 2 zeros at the end. So this will be something like 1, 2, 1, 0, 0. That's it. That's the answer. Now, what if we have to go for something like 125 times some number? Let me create an example over here for you all. 1 to 5, let's say multiplied by 8, 3, 2. Suppose we have to calculate something like this. Now, I hope you have some idea, like we can actually convert this number into some very easy fraction, like 1/8 of 1,000. So all we have to do is divide this number by 8 and we'll put 3 zeros in the end, right? All right. Let's see what else do we have in Vedic maths. Let's move towards the magical numbers. Like let's start with the number 11. Okay. Suppose the number is 54. 11 times 54. I know it's quite easy. इसको तो लोग वैसे भी बहुत जल्दी कर लेंगे. देखते हैं इसको किस किस तरह से किया जा सकता है. वन इज हमारा ट्रेडिशनल मेथड जो कि 2/2 मल्टीप्लिकेशन वाला है, जिससे कि हम सभी सॉल्व कर सकते हैं बहुत इजीली. 1 times 4 is 4, 1 times 5 is 5, and we do something like this. And all in all, the answer will be 594. That will be the answer. अभी हम 2/2 मल्टीप्लिकेशन भी करने वाले हैं, तो आप उससे भी कर लेंगे इसको, लाइक जो कि वैदिक वे से हम करते हैं 2/2 मल्टीप्लिकेशन. इसके अलावा कई कई लोग ये भी कहेंगे कि हम ये भी तो कर सकते हैं. We can write 11 as 10 plus 1, and this will reduce to 540 plus 54, which is again 594. That is also a way to solve this. But if I tell you the method like which I'm using now to solve these kind of calculations, you'll be amazed to see like, can we actually do something like this? So to calculate 11 times 54, all we have to do is write 5, write 4, and there's some in between. That's it. That will be the answer. So if we have to solve something like 11 times 63, I hope you all are following me. So the answer will be 6. We'll write 3, and there's some in between. So the answer will be 693. Okay. There are some rules associated to this as well. Let me show you what do we have to remember regarding this. So let's say we have 11 times 65. Now their sum is actually a 2-digit number. So how do we deal with this? We do the same thing. We'll write 6, we'll write 5, and their sum is actually 11. So instead of writing 11 in the middle, we'll write 1, and 1 will go as carry to this number.
which makes it 715. That's it. That will be the answer. Okay. What if we want to go for like a 3 digit or a 4 digit number? Then what should we do? Okay, so suppose we have something like 11 times 3, 2, 4, 5, 2. Let's say we have something like this. Now, how do we deal with this? So, all we need is this number, which we actually want to multiply with 11. So, I'm adding two zeros to this number, one on the left, one on the right, just to help you understand how this actually works. So let's start the calculation. We'll start adding 2 digits from the right side, 2 digits at a time. That's it. So 2 plus 0 is actually 2. 2 plus 5 is 7. 5 plus 4 is 9. 4 plus 2 is 6. And 2 plus 3 is 5. 3 plus 0 is 3. So that's it. That will be the answer. So 3, 5, 6, 9, 7, 2. That's it. That will be the answer. So this multiplication is actually reduced to some sort of addition. So that's what Vedic math does. So we can multiply any digit number with 11, right? Okay. Okay, let's see what else can we learn in Vedic maths. Let's go for the 2 by 2 multiplication now. Suppose we want to multiply 23 with 32. Suppose we want to do something like this. So in traditional calculation, we do have 4 steps in total. First, we multiply 2 with 3, 2 with 2, 3 with 3, and at last 3 with 2, right? But in Vedic, we'll be using something like this. There will be only 3 steps. The first step is to multiply 2 with 3. And the last step will also be the same, 3 times 2. But we'll do something very strange in the very second step, which is to multiply this digit with this, and to multiply this digit with this number, and then we'll add the result. So let me show you up how this actually works. Let's go for the very first step, which is 2 times 3, which is 6. So our very first step is done. Let's go for the second step. What is 2 times 2? 4. What is 3 times 3? 9, and we'll add their result, which makes it 13. So I'll write 3. 1 will go as carry. I guess ये चीजें हमें पता है कि like अगर 2 digit number आता है तो जो front वाला digit होता है that goes as carry. So 3 times 2, the last step is 3 times 2, which is 6, and we'll add the carry, which makes it 7, 3, 6. So that's how we do 2 by 2 multiplication. And we can use the same concept to go for like 3 by 3 multiplication. Let me show you up a 3 by 3 as well. Suppose we have something like 1, 2, 3 times 2, 1, 3. So I'm just taking very simple digits so that all of you can relate and will be able to understand very easily. Suppose we want to go for a 3 by 3 multiplication, which is 1, 2, 3 times 2, 1, 3. So in this, we'll be having 5 steps in total. Like in traditional method, we have 9 steps. Like we have to multiply this 3 with 3, 2, and 1, and then 1 times 3, 1 times 2, 1 times 1, and then with 2, right? So in total, we have 9 steps. Maybe more than 9 if we'll go for the addition as well. Okay, but in Vedic, we'll be doing something like this. Let me give you up a demo. Like first of all, these steps. So our very first step is to multiply this digit with this digit. This is our very first step.
और लास्ट स्टेप भी बिल्कुल ही सिमिलर रहेगा इसकी जैसा ही, विच इज टू मल्टीप्लाई दिस डिजिट विद दिस डिजिट. सो फर्स्ट स्टेप आई होप आपको क्लियर होगा, लास्ट स्टेप आपको क्लियर होगा. सेकंड स्टेप देखिए. सेकंड स्टेप होगा कुछ ऐसा कि हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे एंड विल ऐड द रिजल्ट. फोर्थ स्टेप भी बिल्कुल सेम रहेगा बट इन डिजिट्स के बीच में रहेगा. इनको मल्टीप्लाई करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे एंड ऐड करेंगे. अब एक बारी ध्यान से थर्ड स्टेप देखते हैं, विच इज द मोस्ट कंफ्यूजिंग step we can say, which is to multiply this digit with this with this, and this with this, and then we'll add the result. So let me show you up how this actually works. Okay, so 1, 2, 3 times 2, 1, 3. Let's go for the very first step. 3 times 3, which is 9. Let's go for the second step now, which is 6 plus 3, which is again 9. Let's go for the third step. Let's go for the third step now. Third step is to multiply this with this, 3 by 2 and 2 by 1. So which makes it 3 plus 6 plus 2, which makes it 11. So I'll write 1. 1 will go as carry. Let's go for the fourth step, which is 1 times 1, 2 times 2, which makes it 5, and 1 carry, which makes it 6. And the very last step is to multiply 2 by 1, which makes it a 2. And this will be the answer for this 3 by 3 multiplication, which is 26199. तो अभी आई होप कि देखने में मे भी थोड़ा अजीब लग रहा होगा क्योंकि मैंने बहुत बारी की है. हो सकता है कि आप सभी ने इतनी बारी नहीं किया होगा, इसलिए आपको थोड़ा अजीब लग रहा है, राइट? ओके, लेट अस मूव अहेड. Okay, let me also share a trick that I usually do, and I do have prepared a lot of tricks with the Vedic maths as well. So let me show you some of them, which makes it more interesting. Uh, so, ma'am, I need your help for this. So, can you pick any number from 1 to 9? Any number, just you let me know. Just keep it in your mind. Any number, just let me know. Have you Okay, picked any sir. number from 1 to 9? Any number? One. No, you don't have to tell me, just keep it in your mind. Pick any number, just keep it in your mind. Okay, sir. Sure, sure. And I hope you all can do, like everyone which is who is here with us in the meeting. So pick any number for 1 to 9, and now multiply that number by 9. So this is the very first step. Multiply that number by 9. Done? Okay. So probably you'll be having a two-digit number until unless you have picked one. So if you have a two-digit number, just add the digits. Suppose you have got 36. So add the digits of the answer, which is like 3 plus 6. Done? Okay. Now we'll subtract 5 from this number. You have to subtract 5 from this result of yours. Done? Okay. So now you have to convert this number into an alphabet. Suppose you have got 1 as an answer, so you will convert 1 to A. If you'll get 2 as an answer, you will convert it into B. Similarly, C, D, E, F, G, H, I, and so on, like that. So I hope you have an alphabet in your mind right now. Okay. Okay.
So just pick any country from this letter. Not a city, not a state. It has to be a country. If you don't know any country from this letter, you can Google if you want to. Otherwise, this trick will actually be ruined. Pick any country from this letter. Any country that you know, like done, done. Yes, sir. All right, all right, all right. Okay, suppose you have picked China. So the word China and said the letter A. चाइना के बिल्कुल लास्ट में ए आता है. तो जो भी आपने कंट्री पिक किया उसके लास्ट में जो लेटर आता है उससे आप कोई भी एनिमल का नाम सोच लीजिए. पिक एनी एनिमल. डन. Okay. Done, sir. ऑल राइट मैम. अब उसके भी लास्ट में जो लेटर आता है उससे कोई भी लेट्स से कलर का नाम सोच लीजिए. Okay. Okay. Done? Okay. So I'm Done. gonna guess or I'm gonna predict what you have actually picked. Uh, is your color orange? Is your color Yes, orange? sir. Yes, sir. Okay. Uh, all right. Is your animal kangaroo? Is it Yes, kangaroo, sir. right? And I hope your Yes. country is Denmark, right? Yes, sir. It was. Right. So it Yeah. it looks very beautiful. कि मुझे कैसे पता लग गया? But it is actually Mm. very easy. It is actually very easy. Let me show you how this Mm. actually works. Okay. We all can do something like this. When I was actually a student, मैंने actually कभी किसी से contact number नहीं मांगा, मैंने कभी किसी से age नहीं पूछी. I have created so many tricks so that I can know their age, maybe contact number. But probably मैं ऐसा कुछ नहीं बताने वाला हूँ. Okay, so let's see how this actually works. मैंने सबसे पहले आपको कहा था कि कोई भी नंबर चूज कर लीजिए from 1 to 9. You can pick any number obviously. एंड मैंने बोला था कि यू हैव टू मल्टीप्लाई दैट पर्टिकुलर नंबर बाय 9. अब Mm. सबसे अच्छी चीज क्या है कि अगर जब हम वेट सेकंड वेयर इज द व्हाइट बोर्ड. ऑलराइट. तो जब हम किसी भी नंबर को 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो भी आंसर आता है लेट्स से दिस इज द टेबल ऑफ 9. दिस इज द टेबल ऑफ 9. 9, 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72 and 81. अब अब हम कोई भी इसमें से आंसर आने वाला है तो जब हम उसके डिजिट्स को ऐड करेंगे तो इट एड्स अप टू 9, राइट. सभी का आंसर 9 ही आने वाला है. और उसमें से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मुझे भी पता है कि 4 ही आने वाले हैं, राइट. Mm. अब 4 से मुझे ये भी पता है कि डी ही चूज करने वाले हैं सभी. अच्छा, अब डी चूज कर लिया. अब एक्चुअली क्या है कि देर आर वेरी लिमिटेड कंट्रीज फ्रॉम द लेटर डी. लाइक वी हैव Mm. जिबॉटी, वी हैव डोमिनिक ऑफ रिपब्लिक, बट वो एज कोई नहीं चूज करने वाला, राइट. एवरीवन विल गो फॉर डेनमार्क. अब के से भी अगर आपको मैं कोई बोलूं कि एनिमल सोचना है तो सबसे पहले कंगारू ही आएगा दिमाग में. उसके अलावा मे बी देर इज अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी किसने बहुत अच्छे से स्टडी किया होगा तो मे बी किसी के दिमाग में कोआला वगैरह या कुछ आए, बट कैंगरू विल बी द फर्स्ट चॉइस. और ओ से कोई और कलर सोचिए जरा ऑरेंज के अलावा. देर इज अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी कुछ आएगा ही नहीं दिमाग में. सो दिस विल बी अ Mm. वेरी फर्स्ट चॉइस. Okay. सो दैट्स हाउ दिस ट्रिक वर्क्स. Okay. आई गेस किसी ने चैट बॉक्स में मेरे से पूछा है कि हाउ टू मल्टीप्लाई 5 with 315. Okay, let us understand how to multiply 5 with 315. So all we have to do is divide this number by 2. So if we'll go for this calculation mentally, we'll be having something like this. So 2 times 1 is 2. Okay, so 5 times 315 will be 2 ones are 2.
then we'll be having 11. So 2 5s are 10. Then we'll be having 15. 2 7s are 14. एंड वी नो कि हम 5 को 10/2 लिख रहे हैं, तो वो जो नंबर है वो 10 से मल्टीप्लाई होगा, तो लास्ट में 5 ही आएगा हमेशा। मैं एक बार फिर से बताता हूँ मैं क्या बोल रहा हूँ। जब इसे एक्चुअली हम 2 से डिवाइड करेंगे इस नंबर को, तो कुछ ऐसा सा होने वाला है, राइट? कुछ ऐसा सा कैलकुलेशन हमारे दिमाग में होना चाहिए। Then we'll have 15, and then you will use 2 sevens of 14, and then हम decimals यूज करके इसको 0.5 बना देंगे, राइट? और हमें पता है कि हमने इसको बाद में 10 से मल्टीप्लाई करना है, तो द आंसर विल बी 1575। दैट विल बी आंसर। सो इसके लिए आई होप कि अगर आप 2 से किसी भी नंबर को डिवाइड कर सकते हैं इजीली, तो ये आपके लिए बहुत आसान रहने वाला है, तो हम ये बहुत इजीली कर सकते हैं। ओके, let's see what else can we learn in Vedic maths. All right, let's go for the squares, which is very useful to all the students after 5th or 6th grade. Uh, let's pick a number which ends with the letter 5 first of all. Suppose we want to find the square of 45. We we all know like square, which square means like multiplying the number by itself. So the square of 45 means 45 times 45. So this is how we do. Okay. तो 1 इज क्या आप इसे 2/2 मल्टीप्लीकेशन से कर सकते हैं, बट इसके लिए तो ऑब्वियसली बहुत ही ज्यादा ही एक सुंदर पर्सपेक्टिव है जो हम यूज कर सकते हैं। whenever we are finding the square of a number which ends with 5, देखो 25 लास्ट में आएगा ही आएगा, सो हम बिना सोचे समझे 25 लास्ट में लिख सकते हैं। अच्छा, अब अगर मैं 5 के साथ डिजिट देखूं which is actually 4, what comes after 4? That is 5. So 4 times 5 is 20. So that will be the answer. The square of 45 is 2025. Let's pick another number. Let us pick another number. Suppose we want to find the square of 55. So we'll write 25 in the end for sure. अब 5 इस लास्ट वाले 5 के साथ जो डिजिट मुझे नजर आ रहा है that is 5. What comes after 5 is 6. So 5 times 6 is 30. So that will be the answer for the square of 55. So that is 3025. So please let me know what will be the square of 75. Please let me know in the chat box what will be the square of 75. Yeah, 5625. Correct. So having having 25 in the end for sure, and we just have to multiply 7 by it. Yes, for sure. Let's say we have to find the square of 85. So we'll do something like this. We'll write 25 in the end for sure. And we'll multiply this digit with its very next digit, which is 9, which makes it 72. So 7225 will be the answer for this. सर समझ में नहीं आ रहा है यहाँ पे। हाँ, मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है।
सपोज हम 65 का स्क्वायर फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो जब भी हम किसी ऐसे नंबर का स्क्वायर फाइंड आउट कर रहे हैं जिसके पीछे 5 है, तो 25 तो आएगा ही आएगा लास्ट में। अब आपको क्या करना है कि ये जो 5 है लास्ट वाला, इसके साथ में जो डिजिट है उसको देखना है, विच इज 6। तो 6 के बाद जो डिजिट आता है 7, उसको उससे मल्टीप्लाई करना है, तो 6 7 42। सो दैट विल बी द आंसर फॉर दिस। अब इसके लिए हम ऐसा करते हैं कि हम एक 3 डिजिट नंबर पिक करते हैं, देखते हैं इस पे कैसे काम करेगा ये। सपोज वी वांट टू फाइंड द स्क्वायर ऑफ 145, तो इसके लिए भी बिल्कुल सेम है, 25 लास्ट में आएगा ही आएगा। अब इस 5 के साथ इस पूरे डिजिट को देखना है आपने, विच इज 14। तो 14 को हम 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 14 टाइम्स 15 विल बी 210। सो द आंसर विल बी 21025। ओके, चलिए अब देखते हैं कि इसके अलावा कोई और डिजिट होगा तो फिर कैसे करने वाले हैं हम। सपोज हमारे पास आ गया स्क्वायर ऑफ 31। सपोज वी वांट टू फाइंड द स्क्वायर ऑफ 31, which means 31 times 31। इसमें हम क्या करने वाले हैं कि 1 तो लास्ट में आएगा ही आएगा, एक बारी आपने इन दोनों डिजिट्स को ऐड करना है, एक बारी मल्टीप्लाई करना है, दैट्स इट। 961 विल बी द आंसर। 41 देखते हैं, 41 को कैसे करेंगे। देखिए 1 तो आएगा ही आएगा, एक बारी इन दोनों को ऐड कर दीजिए, एक बारी मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1681। 51 देख लेते हैं, फिर एक 3 डिजिट नंबर भी देख लेते हैं, तो 1 तो आएगा ही आएगा, एक बारी दोनों को ऐड कर लीजिए। अब 2 डिजिट नंबर है तो आगे वाला डिजिट कैरी चला जाएगा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो वो 26 है, और एक ऐड करेंगे तो विच मेक्स इट 26। तो 2601 विल बी द आंसर। चलिए एक 3 डिजिट नंबर देख लेते हैं। 3 डिजिट नंबर के लिए हम क्या करने वाले हैं। सपोज मुझे 151 का स्क्वायर निकालना है, तो 151 के स्क्वायर के लिए हम क्या करेंगे, 1 तो लास्ट में आएगा ही, अब हम 15 में 15 ऐड करेंगे, विच मेक्स इट 30। तो 0 3 विल गो एज कैरी, 15 times 15 will be 225 plus 3 228, that will be the square of 151। इसके अलावा जरूरी नहीं है कि पीछे 5 या 1 ही हो, कोई भी नंबर आ सकता है। तो मैं आपको एक यूनिवर्सल अप्रोच बताता हूँ जिससे आप किसी भी नंबर का स्क्वायर फाइंड आउट कर सकते और यहाँ पे कैसे होगा? Can't able to view the board. हैं। सपोज हमें 43 का स्क्वायर फाइंड आउट करना है, या इवन वी कैन फाइंड आउट द स्क्वायर ऑफ 36 एज वेल। सपोज 43 का फाइंड आउट करना है, तो कैसे करेंगे। द स्क्वायर ऑफ 3 इज 9, the square of 4 is 16, and there is one more step to this। आप इन दोनों डिजिट्स को मल्टीप्लाई कीजिए, जो कि 12 है, और 12 का डबल आपको यहाँ बीच में लिख लेना है, विच इज 24। अब हम अपना आंसर लिखेंगे यहाँ पे, कैसे लिखेंगे, हम एक एक डिजिट पिक करेंगे इन तीनों पैक्स में से। जैसे मैंने इधर से 9 पिक कर लिया क्योंकि यहाँ पे है ही 9। 24 में से मैं क्या करूंगा, 4 को पिक कर लूंगा और 2 कैरी चला जाएगा साथ वाले नंबर के पास, तो 16 प्लस 2 विल बी 18। हम एक और नंबर करते हैं, कोई बात नहीं, आई नो कि मे बी कुछ कुछ चीजें इसमें से समझ आई होंगी आपको। हम 36 का स्क्वायर फाइंड आउट कर लेते हैं इसी तरह से। 36 का स्क्वायर देख लेते हैं। 6 का स्क्वायर होगा 36, 3 का स्क्वायर होगा 9, अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं तो वो 18 आएगा, और ये 18 का डबल हमें बीच में लिखना है, विच इज 36। चलिए अब आंसर लिखते हैं। तो 36 में से हमने 6 उठा लिया, 3 को हमने साथ वाले नंबर के पास भेज दिया, तो वो 39 बन जाएगा। तो 39 में से हमने सिर्फ 9 उठाया, 3 फिर से साथ वाले नंबर के पास चला जाएगा और वो बन जाएगा 12। सो 1296 विल बी द आंसर फॉर दिस।
So this is how we find the square of any digit number. Okay. चलिए, मैंने जो नंबर्स को स्टडी किया उसके बेस पर आपको एक और चीज दिखाता हूँ, और फिर हम कुछ और मैजिकल नंबर्स को देखने वाले हैं। मैम, आर यू देयर विद अस? Yes, sir. All right, all right. Can you pick any number, ma'am, between 55 to 60? Any weird number that you see? 55 और 60 के बीच में कोई भी अजीब सा नंबर जो आपको लगता है कि ये तो बहुत गंदा सा है, कोई ऐसा नंबर Okay. बताइए। 57. एक मिनट में चेंज कर देता हूँ थोड़ा, ये इस रेंज को थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। 35 से 40 के बीच चूज कर लीजिए, इसमें आप इजीली रिलेट कर पाएंगे। कोई भी एक नंबर जो अजीब सा लगता है आपको। 37. 37। इसके अलावा अगर मैम एक और चॉइस हो आपकी, सर इन्हीं के कोई भी। बीच में हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। 39. 39। ओके ओके, ऑल राइट ऑल राइट। एक नंबर मैम इस रेंज में से चूज कर लीजिए। सपोज 255 से 260 के बीच में चूज करना है हमें। Okay. 259. 259। ओके, ऑल राइट। चलिए, इन दोनों डिजिट्स को मैंने पिक कर लिया। सपोज, एक मिनट में इसे इरेज कर देता हूँ। ओके, सो एक नंबर हमने चूज कर लिया है 39, और एक नंबर हमने चूज कर लिया है 259। ठीक है मैम, कोई भी टू डिजिट नंबर बताइए जरा, कोई भी टू डिजिट नंबर आप बता सकते हैं। एनी टू 19. डिजिट नंबर। 19। ओके। तो जिस तरह से मैंने नंबर्स को स्टडी किया हुआ है टिल 1000, तो मेरे हिसाब से इसका आंसर आएगा 191919। एक्चुअली आपने बहुत अच्छे नंबर्स को पिक किया है। अगर हम 39 और 259 को मल्टीप्लाई करते हैं तो एक बहुत ही स्पेशल नंबर आता है, दैट इज 10101। और अगर आप इसको किसी भी टू डिजिट नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आंसर आएगा। लाइक अगर आप 45 पिक करते हैं तो आंसर आता 45 45 45। अगर कुछ और पिक करते हैं तो वही रिपीटेडली आता। यस। Okay. Mm-hmm. Got it. Mm-hmm. Yes, sir. ओके। Okay, let me see how much of the learners are actually attentively listening. तो मैं एक छोटी सी रिडल पूछता हूँ। Let's see how many of you can answer that. Let's say एक रूम है, और रूम के अंदर एक बल्ब है, और रूम के बाहर तीन स्विचेस हैं। रूम के बाहर तीन स्विचेस हैं, जिनमें से किसी एक स्विच से ये बल्ब जलता है। अब आप रूम के बाहर खड़े हुए हैं, रूम बिल्कुल पूरी तरह से बंद रहेगा। अब आपको क्या करना है, आपको पता लगाना है कि किस स्विच से बल्ब जलता है। अब कंडीशन ये है कि रूम के अंदर सिर्फ आपको एक बार ही विजिट करने दिया जाएगा, एक बार ही आप अंदर जा सकते हैं, कुछ भी इंस्पेक्शन करनी है वो आप कर सकते हैं। तो उसके बेस पर आपको पता लगाना है कि बल्ब का कौन सा स्विच होगा। आपको एग्जैक्टली पता लगाना है कि हाँ कौन सा स्विच होगा। आपको गेस नहीं करना है, आपको प्रेडिक्ट नहीं करना है, आपको एग्जैक्टली बताना है कौन सा स्विच होगा। सो व्हाट डू यू थिंक, हम किस तरह से इस प्रॉब्लम के साथ डील कर सकते हैं? इसका कोई फनी आंसर नहीं है वैसे, इसका लॉजिकल आंसर है।
let's see how many of you can actually have the idea कि हम इसे कैसे solve कर सकते हैं. मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ और अब इस बार आपकी थोड़ी हेल्प भी करता हूँ कि इसके लिए क्या किया जा सकता है. तो मेरा क्वेश्चन था कि रूम के अंदर एक बल्ब है और रूम के बाहर 3 स्विचेस हैं. किसी एक स्विच से बल्ब जलता है और आप रूम के बाहर खड़े हुए हैं. कैसे पता लगाएंगे कि किस स्विच से बल्ब जलता है? अगर तो 2 स्विचेस होते तो काफी आसान था कि मैं एक स्विच को ऑन करता और अंदर चला जाता. अगर बल्ब ऑन है तो मतलब वही वाला स्विच है, अदरवाइज दूसरे वाला स्विच होगा. बट अब स्विचेस 3 है, तो हम क्या कर सकते हैं? सपोज मैं फर्स्ट स्विच को ऑन करके अगर अंदर जाता हूँ, लेकिन अगर बल्ब नहीं जला हुआ तो मुझे पता ही नहीं चलेगा सेकंड और थर्ड में से कौन सा है. और मैं एक ही बार ही जा सकता था, तो वहीं पर ही काम खत्म हो जाएगा, मेरे लिए डिफिकल्ट हो जाएगा फिर. और अगर मैं 2 स्विचेस ऑन करके चला जाता हूँ, फर्स्ट और सेकंड, तो अगर जल रहा होगा तो मुझे नहीं पता चलेगा फर्स्ट से ऑन हुआ या सेकंड से ऑन हुआ. तो यहाँ पे हम क्या ऐसा खास कर सकते हैं कि जिससे हमें पता लग जाए? ओके, तो यहाँ पर हम एक्चुअली हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट यूज करने वाले हैं, मतलब बहुत ही हल्की सी साइंस यूज करने वाले हैं जो सबको पता है. हम क्या करेंगे? फर्स्ट स्विच को ऑन करेंगे, थोड़ी देर इसको चलने देंगे, 5 से 10 मिनट, और फिर से बंद करके दूसरा स्विच ऑन करके अंदर जाएंगे. अगर जल रहा होगा तो ऑब्वियसली सेकंड स्विच है. अगर नहीं जल रहा तो हम बल्ब को टच करके देखेंगे. अगर बल्ब गर्म होगा तो वो फर्स्ट स्विच होगा, अदरवाइज थर्ड वाला होगा. ओके, लेट अस अगेन पिक अप अ वेरी मैजिकल नंबर जिसको हम यूज कर सकते हैं अपनी कैलकुलेशंस में. सपोज वी वांट टू मल्टीप्लाई, सपोज मैंने 3 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर ले लिया विच इज 999, और मुझे इसको मल्टीप्लाई करना है. लेट्स से अभी मैं कोई एक 3 डिजिट नंबर ही ले लेता हूँ विच इज 357. मुझे इसको कैलकुलेट करना है. तो नो डाउट इसमें बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है अगर हम ट्रेडिशनल मेथड से करें, बट हम इसे कैसे अप्रोच करने वाले हैं? तो सबसे पहला स्टेप होगा कि आप इस नंबर में से एक सब्ट्रैक्ट कर लीजिए. Subtracting 1 from this number will give us 356. अब इसके बाद हमें क्या करना है? हम इन डिजिट्स को 9 में से सब्ट्रैक्ट करना शुरू करेंगे. सो 9 minus 3 is 6. 9 minus 5 is 4. And we'll subtract the last one from the digit 10, not from 9, from 10. So 10 minus 7 is 3. So that will be the answer for this. एक और नंबर पिक करते हैं, एक और बारी देखते हैं, थोड़ा और अच्छे से समझ आएगा प्रोबेबली. सपोज हमारे पास है 285. लेट्स से वी हैव समथिंग लाइक दिस. क्या करेंगे? नंबर में से एक सब्ट्रैक्ट करेंगे विच इज 284. 9 minus 2 is 7. 9 minus 8 is 1. And we'll subtract the last one from 10, which is again 5. So 284715 will be the answer. अब suppose कि एक प्रॉब्लम है कि अभी तो 3 9s हैं और यहाँ पर 3 डिजिट नंबर ही था, बट सपोज हमारे पास कोई 2 डिजिट नंबर है. अब हमें करना है, तो अब हमें कैसे करना है? विल मेक दिस अ 3 डिजिट नंबर बाय एडिंग 0 ऑन द लेफ्ट. विल मेक इट 045. और अब हम सेम ही करने वाले हैं. हम 45 में से एक सब्ट्रैक्ट करेंगे विच गिव्स अस 44. और फिर से वही सेम काम. 9 minus 0 is 9. 9 minus 4 is 5. And 10 minus 5 is actually 5. So this will be the answer for this. 44955. Okay. अब हम देखते हैं कि अगर
नाइन्स कम है तो फिर क्या कर सकते हैं हम? सपोज मेरे पास आ गया कोई 4 डिजिट का नंबर 4578। सपोज वी हैव समथिंग लाइक दिस। अब क्या करेंगे? अब हमारे पास नाइन्स कम पड़ गए हैं तो हमें इसके लिए कुछ अलग करना पड़ेगा। इसके लिए हम क्या करेंगे? हमारे पास इस डिजिट का इलाज नहीं है, इन तीनों डिजिट्स का इलाज हमारे पास है क्योंकि हमारे पास 3 नाइन्स हैं। तो हम इसके लिए क्या करने वाले हैं? हम इस डिजिट में 1 ऐड करेंगे विच मेक्स इट 5, और हम 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे पूरे नंबर में से। 4578 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे विच विल बी 457V। और इन 3 डिजिट्स के लिए हम वही करने वाले हैं जो अभी तक कर रहे थे। 9 - 5, 9 - 7 and 10 - 8, which is again a 2. So that will be the answer for this. So 4573422. सिमिलरली इसी तरह से जैसे अभी हम स्क्वायर्स कैलकुलेट कर रहे थे, उसी तरह से हम स्क्वायर रूट्स और क्यूब रूट्स भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ कि उसमें हम कैसा करते हैं। ओके, सपोज वी वांट टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 576। तो पहले देखते हैं हमारे पास कौन कौन सी अप्रोचेस हैं ऑलरेडी। एक तो हम प्राइम फैक्टराइजेशन यूज कर सकते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद हम पेयरिंग करते हैं और फिर स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर पाते हैं एक्चुअल में। एक और मेथड है हमारे पास विच इज डिवीजन मेथड, लॉन्ग डिवीजन मेथड, जो कि आई गेस स्कूल्स में करवाया जाता है। और एक हमारे पास है प्रेडिक्शन मेथड, तो हम उस पर काम करते हैं। वो मे बी आपको थोड़ा सा नया लगे, वो ज्यादा अच्छा है, जिससे कि हम बहुत जल्दी फाइंड आउट कर सकते हैं कि किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट क्या होगा। चलिए, उसके लिए आपको ये छोटी सी चीज पता होनी चाहिए कि जब भी हम किसी ऐसे नंबर का स्क्वायर निकालते हैं विच एंड्स विद 1 और 9, तो उसका जो भी स्क्वायर रहेगा इट विल एक्चुअली एंड विद 1। सपोज 9 का स्क्वायर 81, 19 का स्क्वायर 361, 29 का स्क्वायर 841, तो इट एक्चुअली एंड्स विद 1। तो ये हमें पता होना चाहिए। इसके अलावा जब हम किसी ऐसे नंबर का स्क्वायर करते हैं विच एंड्स विद 4 and 6, तो उसके स्क्वायर में पीछे 6 आता है। सिमिलरली 3 और 7 डिजिट्स वाले स्क्वायर्स के पीछे 9 आता है, एंड 2 और 8 वाले डिजिट्स के पीछे 4 आता है, और 5 इज द ओनली वन जिसके पीछे 5 आता है। ओके, अब हम इसे कैसे यूज करने वाले हैं? सपोज हमारे पास एक नंबर है suppose we want to find out the square root of 1849. We want to know what will be the square root of this number. तो आई होप कि आप सभी को पता है स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है। हम ये पता करना चाहते हैं कि ये नंबर किसका स्क्वायर है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम ये प्रेडिक्ट करेंगे कि ये जो नंबर है ये किन दोनों नंबर्स के स्क्वायर के बीच में आता है। विच मीन्स जैसे 30 का स्क्वायर होता है 900, ऐसे नंबर्स का स्क्वायर हम बहुत इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं 10, 20, 30, 40, 50, 60 एंड सो ऑन। तो 30 का स्क्वायर ये होता है, 40 का स्क्वायर ये होता है 1600, एंड 50 का स्क्वायर होता है 2500। तो हमें इतना आइडिया लग गया कि जो भी इसका स्क्वायर रूट होगा वो 40 से 50 के बीच होगा, क्योंकि नंबर जो है वो 1600 से 2500 के बीच आ रहा है। तो जो भी इसका स्क्वायर रूट होगा वो 40 से 50 के बीच होगा, इतना हमें पता लग गया।
1849, हमें इतना पता लग गया कि इसका स्क्वायर रूट 40 से 50 के बीच में होगा। ठीक है, अब हम वो टेबल यूज करेंगे छोटा सा जो हमने बनाया था, कि अगर पीछे 9 आ रहा है तो इसका मतलब है या तो नंबर 43 होगा या फिर नंबर 47 होगा। अब आपको एक छोटा सा काम करना है सिर्फ, और यू विल बी एबल टू नो द आंसर। आपको सिर्फ ये बताना है कि ये नंबर किसके ज्यादा क्लोज है, 1600 के ज्यादा क्लोज है या 2500 के ज्यादा क्लोज है। ये 1600 के ज्यादा क्लोज है, तो आंसर विल बी 43, क्योंकि 43 उसके ज्यादा क्लोज है। 43 के पास है 1600, सो द आंसर विल बी 43। एक और नंबर पिक करते हैं, जल्दी से करके देखते हैं। सपोज हमारे पास नंबर है 4489, या कोई और नंबर पिक कर लेते हैं जिसके पीछे 9 ना हो एटलीस्ट। सपोज वी हैव 7056। ओके, सबसे पहला काम हमारा रहेगा ये पता करना कि ये किन दोनों नंबर्स के स्क्वायर्स के बीच में आ रहा है। तो ये 80 से 90 के बीच में आएगा, क्योंकि 80 का स्क्वायर होता है 6400 एंड 90 का होता है 8100। ये देखने के बाद हम देखेंगे यूनिट्स प्लेस पे क्या डिजिट है, विच इज 6। तो या तो फिर ये 84 का है या तो फिर ये 86 का है। अब आपने देखना है किसके ज्यादा क्लोज है, 6400 के ज्यादा क्लोज है, इसके ज्यादा क्लोज है, इसके ज्यादा क्लोज है, तो आंसर होगा 84। इसके अलावा भी नो डाउट देर आर सो मेनी पॉसिबिलिटीज या सो मेनी थिंग्स दैट वी कैन एक्चुअली यूज इन वैदिक मैथ्स, बट ऑब्वियसली टाइम की शॉर्टेज की वजह से आई होप कि अभी हमें यहाँ पे ही रुकना चाहिए। आई होप कि आप सभी को कुछ चीजें इसमें से सीखने को मिली होंगी। हो सकता है बहुत सारी चीजें आपको आती हूँ, कुछ चीजें आपको नई सीखने को मिली हो। और इफ यू डू हैव एनी क्वेरीज, प्लीज लेट मी नो। Participants, you can write down your queries in the chat box. दब Okay. Okay, someone is saying, can you re-explain the last one? Okay. Yes, sir. All right. So let us understand how to do the square root. All right. So let's pick up a number. Let's say we have 2809. So our very first step is to find कि ये जो नंबर है वो किन दोनों नंबर्स के स्क्वायर्स के बीच में रहेगा। सो ऐसे नंबर्स का स्क्वायर निकालना काफी इजी है, लाइक स्क्वायर ऑफ 50, स्क्वायर ऑफ 60, स्क्वायर ऑफ 70। तो सबसे पहले मैंने ये आइडिया लगा लिया कि ये जो नंबर है वो 2500 और 3600 के बीच में है। तो जिस भी नंबर का ये स्क्वायर है वो 50 से 60 के बीच में होगा फॉर श्योर। ठीक है, अब इसके पीछे मुझे 9 नजर आ रहा है, यूनिट्स प्लेस पर 9 दिख रहा है मुझे। तो या तो नंबर 53 होगा या फिर नंबर 57 होगा। तो ये दो स्टेप्स हमने क्लियर कर लिए। सबसे पहले हमने देखा कि किन दोनों नंबर्स के स्क्वायर्स के बीच में आ रहा है। दूसरा, यूनिट्स प्लेस पे डिजिट देखा, जिससे हमें पता लग गया इधर द नंबर विल बी 53 और 57। अब हमें ये देखना है कि 2809 किसके ज्यादा क्लोज है, 2500 के ज्यादा क्लोज है या 3600 के ज्यादा क्लोज है। तो ये 2500 के ज्यादा क्लोज है, तो 53 विल बी द आंसर, क्योंकि 50 के क्लोज पे 53 है। तो 53 विल बी द आंसर फॉर दिस। सो आई होप यू गॉट द आइडिया कि हम किस तरह से स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर रहे हैं। और इसी तरह से हम क्यूब रूट के लिए भी बहुत ही सिमिलर सा मेथड यूज करते हैं। आप क्यूब रूट किसी भी नंबर का विद इन 2 3 3 4 सेकेंड्स निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ वैदिक मैथ्स। All right, so that's it. That's from my side. I hope you all like that.
All right. Thank you so much. Ah, thank you so much, Saurabh sir. You have explained each and everything in a very easier way, and I hope that each one of us will apply all these techniques while solving any mathematical problem. So, if there will be any query from any of the participant, we will definitely let you know, and we will mail the all the answers to them as well. So now I invite my colleague Miss Mehak for the formal vote of thanks. I deem it a I deem it a great honor to propose the vote of thanks on this online national workshop on Vedic math. I would like to express sincere thanks to our resource person, Mr. Saurabh Sharma, for accepting our invitation and gracing this occasion. I also wish to express my profound gratitude to the organizers. First of all, the head of our institute, our worthy, dynamic, and beloved principal, ma'am, Dr. Kiran Angra, whose exemplary vision is the foundation of this workshop. Ms. Anchal, the convener, who has left no stone unturned in organizing today's workshop. We are also thankful to all the participants who have turned up in such great numbers. Once again, I thank all of you for your cordial cooperation. Thank you. Thank you so much, Saurabh sir. Hopefully, we will join again. Yeah, for sure. Yeah, probably I'll be hoping like if I'll get a Yeah, chance to like just a meet in second. person with the students and the teachers. Thank you so much, Saurabh sir. Hopefully, we will join again. And participants, the feedback link is in the chat box. So just fill that out. All of you are requested to fill the feedback form before leaving the meeting.
दे दे बट हमने तेरे को more regularly messaging. லிங்க் அப்படியே காப்பி பண்ணி அது மாதிரி நம்ம அதுக்கும் அதுவும் உள்ள இருக்கிறீங்களேன்ட்டு நான் कहाँ हो सब?
ऐसे कुछ होता है क्या इसमें? तब ना वो प्रेस करते हैं ना इसको तब मेरे को
लोग के पास जाते हवा में जाते हैं तो हम लोग को मतलब दिक्कत होता है, हम लोग हो जाते हैं तो दिक्कत होता है, मतलब न्यूज टाइप ऑफ बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन साइकोलॉजिकल फिजिकल काले तरह के विकास फोन कर सकते हैं भाई हम कर रहे हैं हां तो सब चल एक बात किसके पूरा प्रोजेक्ट वाला सर से जो लगाना है ना मुझे कौन गाना गाडो के कॉल चुनाव दिन है कि वेस्टिला में जाना नहीं खाली लॉलीपॉप गाना तो सब कुछ समझ लॉलीपॉप गलत तो भाई क्यों ना की फोटो मारे मेरा कहाँ है भाई सर्टिफिकेट? कभी भी कोई दिक्कत हो मुझे को